सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज की वीडियो ड्रॉ करने वाले हैं मेसी सर की ड्राइंग जो कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ है। तो ये वाला पिक मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो गाइस इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। तो यहाँ पर जो आइवरी पेपर है उसका यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो रफ साइड है वहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस इस एपिसोड में मैं आउटलाइन बनाने वाला हूँ जो कि ग्रिड का मेथड यूज करके। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट ड्राइंग ग्रिड आता है उसका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले से फोटोग्राफ चूज कर दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर फोल्डर में जाकर इस तरीके से आपको चूज करना है। तो आप जितना साइज में ड्रॉ करना चाहते हो यहाँ पर कर देना, A4 या जो भी साइज है। तो गैलरी ऑप्शन में जाकर आपको फोटोग्राफ को चूज करनी है। तो गाइस अभी यहाँ पर जो लेवल वगैरह और जो लाइन वगैरह है उसको मैं टिक कर दिया। तो यहाँ पर लाइन वगैरह और जो लेवल वगैरह है यहाँ पर बन जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जो लेवल वगैरह और जो नंबरिंग वगैरह और जो ग्रिड वगैरह बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर जो कलरिंग पिक्चर को आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो इजीली आप आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद यहाँ पर ब्लैक एंड हो जाएगा। तो इजीली आप आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वन सेल का साइज है 20 mm इसका 2 सेंटीमीटर। आपको 2 सेंटीमीटर छोड़ के आपको जो है ग्रिड लाइन बनानी है मार्क करके। तो आप यहाँ पर गैस बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पर आप जितना मर्जी आप साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, 30 60 जितना करो उतना आप करके यहाँ पर जो ग्रिड लाइन बना सकते हो। तो गैस अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ग्रिड लाइन में बनाने वाला हूँ। तो 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पर मैं किसी मदद से मार्क कर देने वाला हूँ चारों साइड। तो यहाँ पर जो फेवर कट का जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो फेवर कट आप कोई भी फेवर कट का मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी ब्रांड का मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हो, लाइट पेंसिल या कोई भी एजी पेंसिल या 2B पेंसिल यूज करके भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो हमेशा लाइट पेंसिल ही यहाँ पर यूज करना। तो चारों साइड यहाँ पर मार्क करने के बाद यहाँ पर जो ग्रिड लाइन है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देना हूँ यहाँ पर। उसके बाद आगे मैं आउटलाइन बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गैस मैं ग्रिड लाइन वगैरह मार्किंग वगैरह कर दिया हूँ। तो अभी यहाँ पर आउटलाइन बनाने वाले हैं। तो उससे पहले गैस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, दिखा देता हूँ, जो कि गैस शो रियल साइज का। तो इसको क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पर जो सेल का साइज है और जो पेपर में हम जो सेल बनाए हैं जो ग्रिड लाइन वगैरह जो बॉक्स का साइज सेम हो जाएगा। तो हमने तो पेपर में 2 सेंटीमीटर छोड़ के हमने बनाया तो 2 सेंटीमीटर है बॉक्स का साइज। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सेल का साइज 2 सेंटीमीटर। तो आप इजीली अभी क्या कर सकते हो, इजीली जो आउटलाइन है ड्रॉ कर सकते हो जो जिस बॉक्स में जैसा है। तो उस तरह से आपको यहाँ पर आउटलाइन को ड्रॉ करना है। तो इजीली आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो साइज सेम हो जाएगा। तो गाइस आप कोई भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आई हो गया, नोच हो गया, लिप्स हो गया, कोई पार्ट से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, आप कोई भी पार्ट से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट कहाँ से कौन सी बॉक्स में पड़ रहा है आपको देखना पड़ेगा। तो ऊपर से साइड देख सकते हो यहाँ पर जो 3 नंबर बॉक्स में, और इधर की साइड देख लेते हैं, इधर की साइड 4 नंबर बॉक्स। तो इसके मिडिल में जो बॉक्स है उस बॉक्स से ये वाला पार्ट जो ईयर की जो ये वाला पार्ट है स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो जिस बॉक्स में जैसा है उसी तरह से सिर्फ आपको आउटलाइन को ही ड्रॉ करना है। तो थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पर आउटलाइन को ड्रॉ करना है। थोड़ी बहुत मैं आगे जो स्केल की मदद से थोड़ी बहुत मैं मेयर करके जो आई वगैरह की जो आउटलाइन है उसको बनाने वाला हूँ, क्योंकि परफेक्ट तरीके से आउटलाइन को बनानी है यहाँ पर। और एक चीज़ की आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर शेडिंग भी कर देनी है, क्योंकि गाइस बाद में जब शेडिंग करोगे तो इजीली आप जो कि ड्रॉ कर पाओगे, लाइट शेडो को ऑब्जर्व करके आप इजीली शेडिंग वगैरह कर पाओगे। तो यहाँ पर जो बॉक्स सेम साइज है तो इसलिए आप थोड़ी बहुत शेडिंग भी कर लीजिए, तो बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो आउटलाइन है बनाता हूँ। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun?
guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? On my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a तो गाइस यहाँ पर जो आउटलाइन है वो तो लगभग कंप्लीट होने वाला है गाइस। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, जहाँ पर गाइस मैं ग्राफाइट या चारकोल पेंसिल यूज करके यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो भी गाइस अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो यहाँ पर मैं डालता हूँ, ट्यूटोरियल वीडियो। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे बहुत ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।